Yes, in the last lecture we have started with the error detection and error correction. We have seen the various methods for error detection, that is parity method, checksum method and cyclic redundancy check. These two methods we have already covered, that is parity, with the help of parity how to detect an error, and with the help of checksum error how to detect an error. The third method for error detection is cyclic redundancy check. So, we are going to study the cyclic redundancy check in this lecture, in this session. Okay, this is the block diagram of an encoder, this is the encoder and this is the decoder. Okay, this is at the transmitter side and this is at the receiver side. So, what actually happens in the CRC, in the cyclic redundancy check, suppose we are going to transmit the information with the help of CRC as a 4-bit information. Suppose 4-bit information is there. I am considering the 4-bit information as 1 0 0 1. Okay, suppose this is the 4-bit information, we need to transmit with the help of cyclic redundancy check. Now, between the transmitter and receiver, the divisor is common. What actually we do, whatever the data word we have to divide with the common divisor. As you will observe in the generator and checker, the divisor is common. I will consider the divisor so that it will be more clear to you. Suppose the divisor is 1 0 1 1. This is the divisor, this is the dividend, and after division of this divisor with this divisor with data word, the remainder will generate. That remainder is nothing but our redundancy. Redundancy means the extra bit which are encapsulated with the original information. Okay, so whatever be the number of data word, how many number of data word is there? 1 2 3 4. So 4 minus 1, 3 zeros we need to add first. Before dividing that number, before dividing the input information, we have to add the data bits minus 1 number of zeros. Data bits are 4. So, 4 minus 1, 3 number of zeros we are adding with the original information, and the divisor is common between the transmitter and receiver, between the encoder and divisor, between the transmitter and receiver. Okay. Now, this 1 0 0 1 will approach over here, will saved into here 1 0 0 1. This information came directly into the code word register, and now we will see how the code word is generated. For generation of code word, we know the data word is 1 0 0 1. The data word is 1 0 0 1 and the divisor is 1 0 1 1. The divisor is 1 0 1 1. Now, we have to add 3 zeros in every information as it is of 4-bit number. अगर डेटा का साइज ज़्यादा रहेगा तो फिर ये नंबर ऑफ जीरोज भी बढ़ेंगे. मीन्स नंबर ऑफ डेटा, द लेंथ ऑफ द डेटा वर्ड -1 विल बी द नंबर ऑफ जीरोज एडेड इन द जनरेटर. ओके, तो यहाँ पे कितने जीरोज ऐड करने हैं? 3 जीरोज ऐड करने हैं, 1 2 एंड 3. ओके, नाउ what is the function of a generator? The generator will divide this number with this divisor, this complete number of 1 0 0 1 0 0 0 with this divisor. Then what happened? See, we know we have studied the binary division in the last video. So, how to perform the binary division? We have to observe the 1 in the MSB. If 1 is there in the MSB, it is divisible with this number. So, 1 into 1 0 1 1, that is 1 0 1 1. Now, perform the exclusive OR operation. XOR operation हमको perform करना है. So, 1 XOR with 1 is 0, 0 XOR with 0 is 0, 0 XOR with 1 is 1, 1 XOR with 0, sorry 1 XOR with 1 is 0. Now, we will keep this 0 on this side. Okay, अभी MSB में 1 है क्या? नहीं है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाई 0. सो वी आर गेटिंग 0 0 0 0. परफॉर्म द एक्सओर ऑपरेशन. इट इज 1 0 0. कीप दिस 0 ऑन दिस साइड. नाउ अभी MSB में 1 है, मीन्स इट इज डिविजिबल. सो 1 इंटू 1 0 1 1. परफॉर्म द एक्सओर ऑपरेशन.
0 XOR with 0 is 0, 0 XOR with 1 is 1, 0 XOR with 1 is 1, this 0 on this side, okay, this 0 on this side, so multiplied by 0, so MSB में 0 नहीं है इसके लिए, so we are getting 1 1 0, okay, this is the remainder, this is the remainder, okay. Now this remainder is इनकैप्सुलेटेड विथ द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। जनरेटर ने ये डेटा वर्ड को 30 के साथ ऐड करके इस डिविजर से डिवाइड किया, तो जो रिमाइंडर जनरेट हुआ दैट इज नथिंग बट 110। दिस 110 इज जनरेटेड फ्रॉम दिस जनरेटर एंड एडेड हियर, ओके। नाउ इट बिकम्स अ कोड वर्ड। कोड वर्ड में क्या होता है? डेटा वर्ड प्लस रिडंडेंसी, ठीक है। डेटा वर्ड इज ऑफ 4 बिट, 3 bit redundancy is added in it. Now through the unreliable transmission the data is transmitted to the receiver. Here I have indicated A3, A2, A1, A0, whereas I have indicated B3, B2, B1, B0 here. Why? Because maybe in the transmission medium the data gets corrupted. So directly A is not received at the receiver, means whatever be the information received at the receiver, we are not confirmed that it is correctly received or not. For that I have mentioned here B3, B2, B1, B0. Redundancy may also change, that is Q3, Q2, Q2, Q1, Q0. Likewise, now what is the function of a code word? Now we have to perform the decoding operation. Decoding operation perform करने के लिए हमको पता था कि डेटा एनकोड जो किया है वो क्या है? 1001, दिस इज द डेटा, एंड redundancy क्या है? 110, okay. Now the same number which is received at the receiver, ये ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट किया, रिसीवर ने रिसीव किया। अभी सेम इंफॉर्मेशन को इसी डिवीजर से चेकर क्या करेगा? फिर से डिवाइड करेगा। चेकर विल डिवाइड द सेम इंफॉर्मेशन विद द सेम डिवीजर, ठीक है। तो डिवीजर सेम रहेगा। आई विल क्लियर दिस, नोट डाउन एंड just look what happens when we divide the same number in the receiver, okay. The divisor will remain same 1011. Now at the receiver we have received suppose 1001 with 110. Now perform again the same division, this 1 into 1011, perform the XOR operation. 0 XOR with 0 is 0, 0 XOR with 1 is 1, 1 XOR with 1 is 0, keep this 1 on this side, MSB में 0 है इसके लिए multiplied by 0, 4 zeros अगर रहेंगे तो ये हो जाएगा 101, फिर ये 1 इस साइड में आ जाएगा। अभी MSB 1 है, so 1 into 1011, that is nothing but 0 0 0 and this is again 0. If we are getting रिमाइंडर 0, अगर हमको रिमाइंडर 0 मिलता है वो इंडिकेट करता है कि एरर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन हमको रिसीव हुआ कंप्लीट पैकेट को फिर से सेम डिवीजर के साथ में, देखो डिवीजर तो सेम ही रहेगा, ट्रांसमीटर साइड पे भी, रिसीवर साइड पे भी, जनरेटर साइड पे भी, चेकर साइड पे भी, सेम डिवीजर से जब हम डिवाइड करेंगे और वी आर गेटिंग द रिमाइंडर 0 which indicates that the information is correctly received and the decision logic will accept the information and again A3, A2, A1, A0 is generated, okay. Suppose what happens during the transmission, suppose one of the bit is corrupted. We will take an example, it will be more clear to you what happens when any one of the bit is corrupted. Suppose this is the information, if during the transmission the second bit is changed, instead of 0 it is received as 1, suppose यहाँ पे एरर इंट्रोड्यूस हो गया है, सारा इंफॉर्मेशन सेम रहा, सिर्फ उसमें एक जो सेकंड पोजीशन है उस पर एरर इंट्रोड्यूस हो गया है, इंस्टेड ऑफ 0 वी हैव रिसीव्ड एज 1. नाउ अगेन परफॉर्म द सेम डिवीजन, दिस 1 into 1011, perform XOR operation, 1 XOR with 0 is 1 1 0, keep this one on this side, this again 1 into 1011, we are getting 1 1 0, keep this one on this side,
this 1 into 1 0 1 1. So it is 1 1 0 and this 0 on this side, this 1 into 1 0 1 1. So we are getting 1 1 1. This is non-zero रिमाइंडर, नॉन-जीरो रिमाइंडर आएगा, इसका मीनिंग है कि एरर इंट्रोड्यूस हुआ है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक. दिस इज यूज्ड फॉर एरर डिटेक्शन. ये हमने जब OSI लेयर स्टडी किया था तब हमने देखा था कि डेटा लिंक लेयर में एरर कंट्रोल होता है, तो दैट एरर कंट्रोल इज विद द हेल्प ऑफ CRC ओनली. ठीक है, वो एरर कंट्रोल किससे होता है? CRC से होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक से होता है. दैट्स वाई साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो भी रहेगा उस इंफॉर्मेशन के साथ में वो इंफॉर्मेशन -1 नंबर ऑफ जीरोज ऐड करके उसको एक डिवीज़र के साथ में डिवाइड करेंगे. जो डिवीज़र ट्रांसमीटर और रिसीवर साइड में सेम रहेगा. डिवीजन परफॉर्म होने के बाद में जो भी रिमाइंडर जनरेट होगा दैट इज नथिंग बट आवर रिडंडेंसी. दैट रिडंडेंसी इज इनकैप्सुलेटेड विद द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन एंड इट बिकम्स अ कोड वर्ड. अभी ये कोड वर्ड हम ट्रांसमिट कर देंगे. जब ये कोड वर्ड रिसीवर पे मिल जाएगा, अगर इसमें एरर इंट्रोड्यूस नहीं होता है तो क्या होगा, ये चेकर सेम डिवीजर के साथ में कंप्लीट नंबर को डिवाइड करेगा. इफ द रिमाइंडर इज 0 indicates there is no error introduced during the transmission, and non-zero remainder indicates the presence of error in the received signal. Is it okay? CRC, if it is clear then okay. If you have some doubt, we will solve some more example based on CRC. If you have any doubt, comment in the comment box. I will make some more videos based on some examples on CRC. Okay, thank you.